About motion. It's literally everywhere. A planet going around the sun, a car on the freeway, you name it. Today, we're going to decode its secret language and turn all those physics terms that sound kind of confusing into a story that just makes sense. So let's just jump right in with a little puzzle. You've got a race car, it does a 500-mile race, and it ends up in the exact same spot it started. The question is, how far has it been displaced? Now, by the end of this, you're not only going to know the answer, which might surprise you, but you'll get why it's the right one. So, where do we even begin with all this? Well, to really get a grip on any journey, whether it's a race car or a rocket ship, you've got to understand that physics basically speaks two different languages, and getting this difference is absolutely key for everything. Okay, so what are these two languages? They're called scalar and vector. It's pretty simple, really. A scalar just tells you how much of something there is. Like 10 kilometers. It's just a number. But a vector tells you how much and which way. So not just 10 kilometers, but 10 kilometers north. That which way part, that is everything. And this idea, it leads us right into our first big face-off. Distance versus displacement. These two really show the whole scalar versus vector thing perfectly. Let's just imagine a simple road trip. All right, so imagine this. Winding blue line is the path our car actually drove. Distance is literally every single meter of that road. Every twist, every turn, all of it added up. For this little trip, that's 21 meters. It's a scalar. It's just a number telling us how much ground we covered. But displacement? Oh, displacement does not care about your scenic route at all. It only cares about two things. Where did you start and where did you end? It's the straight line, the as-the-crow-flies path. So while we traveled 21 meters, our displacement is just 12 meters to the east. See? It's got the magnitude, 12 meters, and the direction, east. That's a vector for you. So let's just lay this out real quick. Distance is the actual path you took, and it's always going to be a positive number, right? You can't untravel a road. But displacement, that's just the shortcut. And because of that, it can be positive, negative, or even zero. And here's the key rule. Your distance is always going to be bigger than or equal to your displacement. The scenic route can't be shorter than the shortcut, right? And this leads to a really cool, kind of weird idea. You can go out and run a whole marathon. You cover a massive distance, more than 26 miles. But if you end up right back at that starting line, your displacement is zero, zilch, nada. Because from start to finish, you haven't gone anywhere. Okay, so that's distance and displacement. Now, let's build on that with our next pair, speed and velocity. It's not just about where you go anymore, it's about how fast you get there. Speed is super simple. It's what your car's speedometer tells you. 60 miles per hour, that's it. It's just a number. It's a scalar. It has no idea if you're going north, south, east, or west. It just knows how fast. Velocity, though, velocity is the smart one. It takes speed and adds that all-important direction. So saying you're going 60 miles an hour, that's a speed. But saying you're going 60 miles an hour due north, now that's a velocity. And velocity isn't just a one-size-fits-all thing. You've got uniform velocity. Think cruise control on a perfectly straight highway. Constant speed, constant direction. Then there's variable velocity, which is, well, pretty much all real-world driving. You speed up, slow down, take a turn. We can also figure out your average velocity for a whole trip. And finally, there's instantaneous velocity. That's your velocity at one single moment in time. But wait a minute. What happens when your velocity isn't constant? What do we call it when it changes? Well, that's when things get really exciting. That's where acceleration comes in. Now, this is huge. In everyday talk, we think acceleration just means hitting the gas, right? Speeding up. But in physics, it's so much more. Remember, velocity has direction. So any change in velocity is acceleration. Speeding up? Yep. Slowing down? Also acceleration. And here's the kicker that gets everybody. Taking a turn, even at a constant speed, is acceleration. Why? Because your direction is changing. It really breaks down into three simple states. Stepping on the gas is positive acceleration. Hitting the brakes is negative acceleration. And if you're just cruising along with a perfectly steady velocity, you guessed it, your acceleration is zero. And listen, this isn't some abstract textbook idea. You feel this every single day. That force that pushes you back into your seat when the light turns green, that's acceleration. That lurch forward when the driver slams on the brakes, that's acceleration too.
You literally feel it. Okay, this is cool. What if we could take this whole journey, the position, the speed, the acceleration, and tell the entire story in a single picture? No words, just a graph. And we can. We do it with motion graphs. Now, don't get intimidated by these. The idea is actually pretty simple. On the left, you've got a distance time graph. It just plots where something is over time. On the right, a velocity time graph shows how fast something's going over time. They're like a visual diary of a journey. Here's the secret. It's all about the slope of the line. For a distance time graph, the steepness tells you the speed. A flat line, you're not moving. A super steep line, you're flying. Now for the velocity time graph, the slope tells you something different. It tells you the acceleration. A steep line there means you're changing your velocity really, really fast. Okay, it is time. Let's go back to the very beginning and solve that race car puzzle now that we know the secret language of motion. And there it is. The car's odometer would show it covered a massive distance of 500 miles, for sure. But since its final position was the exact same as its starting position, its overall change in position, its displacement, was 0. A big fat 0. All right, let's just quickly recap the big takeaways. 1. Motion speaks in scalars and vectors. How much versus how much and which way. 2. Distance is the path you actually travel. Displacement is just the shortcut from A to B. 3. Speed is just how fast. Velocity is how fast in a certain direction. And 4. Acceleration is any change in velocity, speeding up, slowing down, or just making a turn. And you know, probably the most famous example of acceleration on the planet is just gravity. Here on Earth, if you drop something, it speeds up by about 9.8 meters per second every single second it falls. That's a constant, steady acceleration pulling everything down. So, I'll leave you with one last thing to chew on. If you throw a ball straight up in the air, at the very top, at its highest point, it stops for a split second, right? Its velocity is 0. But at that exact same instant, what is its acceleration? Is it positive, negative, or is it 0 too? Think about it. That's the fun of digging into this stuff. कभी सोचा है कि जब कोई कार चलाता है या गेंद फेंकता है तो चीजें असल में चलती कैसे हैं? आज हम मोशन के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। ये वो नियम है जो हमारे चारों ओर की हर चलती हुई चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक इंसान चलती ट्रेन में आराम से बैठा हुआ है। अब सवाल ये है कि वो इंसान चल रहा है या फिर वो स्थिर है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है और कहाँ से देख रहा है। अगर ट्रेन के अंदर से ही देखे तो वो इंसान तो अपनी जगह पर स्थिर बैठा है, लेकिन अगर कोई बाहर खड़े पेड़ के नजरिए से देखे तो वही इंसान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन हिस्सों को एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले रिलेटिविटी, फिर दूरी और विस्थापन का फर्क, उसके बाद चाल और वेग में क्या अंतर है, फिर त्वरण को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये ग्राफ हमें मोशन की कहानी कैसे सुनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट की। किसी भी चीज की जर्नी को बताने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसने कौन सा रास्ता तय किया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक जाना है। ये जो घुमावदार लाइन दिख रही है, ये वो असल रास्ता है जो शायद किसी कार ने लिया होगा। ये उस यात्रा की कुल लंबाई है। फिजिक्स की भाषा में इसी को हम कहते हैं दूरी। ये बिल्कुल गाड़ी के ऑडोमीटर की रीडिंग की तरह है। उसे बस इस बात से मतलब है कि गाड़ी कुल कितने किलोमीटर चली, किस दिशा में चली, इससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ये एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। पर सोचिए, शुरुआती पॉइंट ओ से आखिरी पॉइंट बी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? जाहिर है वो हमेशा एक सीधी लाइन ही होगी। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ओ से बी तक का ये बिल्कुल सीधा रास्ता। इसी सीधे रास्ते को कहते हैं विस्थापन। मतलब आपकी पोजीशन में जो सीधा सीधा बदलाव आया है, बस वही। और क्योंकि इसमें दूरी के साथ साथ दिशा भी शामिल है, ये एक सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए फटाफट से इन दोनों का फर्क समझ लेते हैं। दूरी वो असल रास्ता है जो तय किया गया और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वहीं विस्थापन शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच का सीधा रास्ता है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ तक कि शून्य भी हो सकता है। सोचिए, अगर कोई गोल चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाए जहाँ से शुरू किया था, तो दूरी तो तय हुई,
पर विस्थापन वो तो शून्य हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई चीज कहाँ गई। अब सवाल ये है कि वो कितनी तेजी से वहां पहुंची, और ये हमें हमारे अगले कॉन्सेप्ट्स की जोड़ी पर ले आता है। यहाँ भी स्केलर और वेक्टर का वही पुराना फर्क काम आता है। चाल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वो बस इतना पूछती है कितनी तेज, जबकि वेग, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो पूछता है कितनी तेज और हाँ, किस दिशा में। चाल का मतलब सीधा सा है कि कोई चीज कितनी तेजी से दूरी तय कर रही है। ये वो नंबर है जो गाड़ी के स्पीडोमीटर पर दिखता है। इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ है वेग, जिसमें चाल के साथ साथ दिशा भी जुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार एक गोल चक्कर पर एक ही चाल से चल रही है, तो भी उसका वेग लगातार बदल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा हर पल बदल रही है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। और अब आता है हमारा अगला और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। ये वो आइडिया है जो हमें बताता है कि वेग में बदलाव को कैसे समझना है। जब कोई कार रेस में तेजी से आगे बढ़ती है, या ट्रैफिक में धीमी होती है, या फिर मोड़ पर मुड़ती है, इन सभी हालतों में एक चीज कॉमन है, उसका वेग बदल रहा है। तो इस बदलाव को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। और ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने के बारे में नहीं है। जब ब्रेक लगाते हैं तो वो भी त्वरण ही है, बस उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, या मंदन भी कह सकते हैं। ग्राफ पर तो त्वरण को पहचानना बहुत ही आसान है। अगर हम वेग और समय का ग्राफ देखें, जैसा कि बाईं तरफ है, तो ये ऊपर की ओर जाती सीधी रेखा का मतलब है कि रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और अब दाईं तरफ वाला ग्राफ देखिए, ये नीचे की ओर जाती हुई रेखा दिखा रही है कि वस्तु लगातार धीमी हो रही है। तो चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये ग्राफ सिर्फ लाइंस और डॉट्स नहीं होते, ये असल में मोशन की पूरी कहानी सुनाते हैं। जरा इस दूरी समय ग्राफ को देखिए। ये सीधी फ्लैट लाइन क्या बता रही है? ये दिखा रही है कि समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूरी बिल्कुल नहीं बदल रही। मतलब ये एक ऐसी चीज की कहानी है जो अपनी जगह से हिली ही नहीं। अब इस सीधी ढलान वाली रेखा को देखिए। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो बिल्कुल स्थिर गति से हो रही है। मतलब वो चीज हर सेकंड में बराबर दूरी तय कर रही है। इसका मतलब है कि उसका वेग एक जैसा है, कांस्टेंट है। और आखिर में ये घुमावदार रेखा, ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो लगातार तेज हो रही है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये लाइन और ज्यादा स्टीप यानी खड़ी होती जा रही है। इसका मतलब है कि वो चीज हर सेकंड में पहले से ज्यादा दूरी तय कर रही है। मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है। तो हमने देखा कि कैसे दूरी और विस्थापन बताते हैं कि कोई चीज कहाँ गई, चाल और वेग बताते हैं कि वो कितनी तेजी से गई, और त्वरण हमें बताता है कि उसकी गति कैसे बदल रही है। यही तो है एक सीधी रेखा में मोशन की भाषा के मूल तत्व। लेकिन दुनिया सिर्फ एक सीधी रेखा में तो नहीं चलती। अब जब हम एक डायमेंशन में मोशन को समझ गए हैं, तो सोचिए क्या होता है जब कोई चीज 2 डायमेंशंस में चलती है, जैसे हवा में फेंकी गई एक गेंद। ये एक सवाल है जिसे हम अगली बार के लिए छोड़ देते हैं।